हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिका गोयल और आपका वेलकम करती हूँ शॉर्टहैंड लर्नर्स पर। ये आज की आपकी मंथली मैगजीन की डिक्टेशन। मंथ है नवंबर 2018। ओके, और एक्सरसाइज है 18। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि स्पीड को 80-85 की स्पीड पर दें या 90-100 की स्पीड पर दें, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 80-90 और 100 तीनों की स्पीड पर दें। तो भाई और बहन, आप जो भी हैं, इतना स्टेमिना किसी में नहीं होता। अगर आपको हर स्पीड पर डिक्टेशन चाहिए तो खुद से रिकॉर्ड करें या फिर एक ग्रुप बनाएं, उसमें सब लोग अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन दें और उसको लिखें। ठीक है, इतना तो कोई भी पॉसिबल नहीं करा पाएगा। ओके, और ये वाला मंथ जो है इसमें 60-70 की स्पीड पर ही डिक्टेशन रहने देते हैं। जो अभी बुक कंप्लीट करके आए हैं, एक मंथ में वो आराम से 80 की स्पीड पर पहुंच जाएंगे अगर वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में मीन्स दिसंबर में हम स्टार्ट करेंगे 75-85 की स्पीड के डिक्टेशन। तो उसमें मतलब जो उसमें मेन फोकस रहेगा स्पीड पे वो 80 के अराउंड की रहेगी। ठीक है, तो ये वाला मंथ पे आप ऐसे ही करते रहिए जो लोग बुक फिनिश करके आए हैं, और जिनकी स्पीड बन चुकी है इस स्पीड पे वो इस मंथ में मैनेज कर लें। अगर आपको 80 की स्पीड पर डिक्टेशन लिखनी है तो आप कैलाश चंद्रा की लिख सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करेंगे 80 की स्पीड पर तो आपको इजीली मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। बट इस मंथ में आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि बिगनर्स के लिए भी डिक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी लोगों पे फोकस करना होता है। अब स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। वर्ड्स बोलूँगी मैं आपको 400 और स्पीड वही 60-70। मेन फोकस रहेगा 65 की स्पीड का। ओके, और जहाँ पे मैं वर्ड्स में ज्वाइनिंग दे रही हूँ तो आप भी कोशिश करिए कि वर्ड्स में ज्वाइनिंग बनाएं, लिखने में बनाएं। ठीक है, ओके, प्लीज़ बी रेडी फॉर द डिक्टेशन। ओके, स्टार्ट। I am delegated to be with this distinguished audience at the 86th annual session of the Indian Science Congress. My special greetings to the foreign scientists and the Nobel for being with us today. I am particularly pleased that this session of the Science Congress is being held in Chennai and at Anna University, which is the pride of Tamil Nadu. This is the part of India where literature, arts, culture, architecture, spiritualism, and science have flourished in a magnificent confluence for many centuries. This land has produced giants of literature like the Sant, poet, and philosopher Rashtrakavi Subramanya Bharati. It has also given birth to three of the greatest Indian scientists of this century, Sir C.V. Raman, who won the Nobel Prize for Physics for the discovery of the Raman effect, Professor S. Chandra Shekhar, who won the Nobel Prize for Astrophysics, and the genius of mathematics Srinivasa
Ramanujam. Science is a major driving force behind social change. There is no aspect of modern life that is untouched by the effects and products of science and technology. More progress of science and technology has taken place in this country than in all the previous centuries of known human history. Their impact on human life, indeed on planetary life, is certain to be far more profound in the coming century. Taken as a whole, the effects of science and technology have been both positive and negative, although, in my opinion, largely positive. All of us, scientists and non scientists alike, have to be concerned about how to minimize their negative effects and how to maximize their benefits for Bahujan Hitya, for the greatest good of the largest number of people. It is obvious, however, that science and technology cannot by themselves take their benefits to the people. They do so in specific socio-economic and political context with the help of right policies and sound delivery mechanism. That is why science has vital stake in progressive politics, people oriented economics, and governance. In turn, have a vital stake in scientific and technological progress, for it is one of the chief guarantors of prosperities and happiness. In this context, I am reminded of what Sir C.V. Raman had said in 1948. There is only one solution for India's economic problems, and that is science, and more science, and more science, and still more साइंस स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, ये हुई आपकी डिक्टेशन। ये डिक्टेशन की स्पीड जो है आपकी 60 के अराउंड ही रही है और कहीं कहीं के काफ़ी जगह 60 से भी कम गई है, क्योंकि ये बहुत टफ थी। तो मैंने कोशिश किया कि आप आउटलाइंस बना सकें, तो इसलिए मैंने इसमें स्पीड को काफ़ी कम रखा है, क्योंकि डिक्टेशन बहुत ही मुझे टफ़ लगी आप बेसिक के हिसाब से। आई थिंक आपसे नहीं लिखी गई होगी, तो इसकी अच्छे से 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करें। लेकिन इसके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, ये बहुत रिपीट होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 1 आउटलाइन है, तो उसको मैंने एक साथ ऐड किया है।
तो आप भी कोशिश करिए कि एक साथ बनाएं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्पीड को इंक्रीज़ नहीं किया है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू प्रैक्टिस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।